Let's discuss relationship between Kc and Kp. Now we know very well that Kc is the equilibrium constant and Kp is equilibrium constant as well. अब Kc में जो subscript C है that represents the molar concentration और Kp के अंदर जो subscript P है that represents the partial pressure of the gaseous ingredient. अब यहाँ पे हम लोग एक गैस फेज रिएक्शन कंसीडर करेंगे. सो consider the general gas phase reaction of time. Now we consider a general gas phase reaction, that is AA gas plus BB gas gives CC gas plus DD gas. This is supposed to be the gas phase reaction at equilibrium. अब A and B, capital A and capital B are the reactant of the forward reaction, whereas capital C and capital D are the product of the forward reaction. Small a, b, c, d are the stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. अब इस रिएक्शन के लिए हम Kp किस तरह से दे सकते हैं? सो Kp for the given gas phase reaction is, अब देखिए Kp कैसे लिखेंगे हम लोग? So by applying law of mass action we can have Kp. So Kp is equal to partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B. This is supposed to be 1. अब यहाँ पे PA, PB, PC, PD are the partial pressures. याद रखना, where PA, PB, PC and PD are the partial pressures of A, B, C and D respectively. अब यहाँ पे और एक चीज हमें समझना होगा कि at constant temperature partial pressure of each component in a mixture of ideal gas is proportional to its concentration. So याद रखें, at constant temperature the partial pressure of the gaseous component of each component in a mixture of ideal gas is directly proportional to the concentration of that component. अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equal to nRT. So we know that what PV equals to nRT. अगर PV nRT है तो हम P को क्या लिख सकते? दज P is equal to nRT अपॉन V. अब इस रिस्पेक्ट में हम PA के लिए क्या लिखेंगे? दस PA is equal to NA RT upon V, where NA be the number of gaseous moles of component A. अब देखिए, number of moles upon volume expressed in liters gives the molar concentration. So this can be given as PA is equal to concentration of A RT. हम ऐसा लिख सकते हैं. अब अगर PA concentration of ART होता है तो PB क्या होगा? 10
PB is equal to concentration of BRT. Then PC is equal to what? Concentration of CRT होगा. And PD is equal to what? Concentration of DRT. ये चीज होगा. अब यहां पे अगर हम PA, PB, PC और PD के वैल्यूज इक्वेशन 1 यानी इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग PA, PB, PC and PD in equation 1 we get. अब हमारे पास क्या होगा देखिए, we can have Kp equals to concentration of CRT to the power C into concentration of DRT to the power D upon concentration of ART to the power A into concentration of BRT to the power B. Now इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं देखिए, दट Kp is equal to concentration of C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A into concentration of B to the power B into what? RT to the power C plus D upon RT to the power A plus B. इस तरह से हम लिख सकते हैं. Now take a look at this. Concentration of C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. इसका मतलब होता है Kc, यानी रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनके मोलार कॉन्सेंट्रेशंस अगर हम कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन फेज के अंदर, तो हम लोगों को जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है उसे हम बोलेंगे Kc. सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc इनटू व्हाट? RT टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B. कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं. अब देखिए C प्लस D क्या चीज है? C प्लस D कंस्टिट्यूट, इधर देखिए, स्मॉल c प्लस स्मॉल d gives the total number of gaseous molecules in the product if we consider forward reaction, and A plus B gives total number of gaseous moles in what? Reactant. So this can also be given as, अब देखिए प्रोडक्ट में जितने गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर आप रिएक्टेंट के गैसियस मॉलिक्यूल से सब्सट्रैक्ट कराते हैं तो यू कैन हैव the change in gaseous moles, that is delta n. So इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. So Kp is equal to Kc into RT to the power delta n. अब यहाँ पे हमें समझना होगा where delta n is equal to number of gaseous moles of product minus number of gaseous moles of reactant, जिसको हम लोग change in gaseous moles कह सकते हैं. So this is the relationship between Kp and Kc.